discuss about the education. Education is a word derived from the Latin word educare, educere and educatum. Educare, educere and educatum. Educare means to care and educere means to develop and educatum means to train or to teach. Now, it is also a wordical meaning. It is also a wordical meaning of education. That means sabdagata artha, or it is a etymological meaning of education. There is 3 words: educare, to care means যত্ন নেবা, educare to develop বিকশিত করিবা, educatum means তালিম দেবা বা শিক্ষাদান করিবা. Now we discuss about the 3 wordical meaning, that is called also a etymological meaning of the education. Education is a word derived from the Latin word or the Greek word educare, educere and educatum. So to care means education always care ourselves for their development. Means the individual care himself after the getting education because of the know about the right and wrong, like and dislike and different types of the care himself from the social prejudices and blindness. Similarly, educare means to develop or to lead out individual. After the getting education, then lead out in the society like a teacher, engineer, doctor, scientist, historian. Every identification get by the individual from the society. That is called to develop or ବିକଶିତ କରିବା. ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ভুল কোটা ঠিক কোটা পছন্দ কোটা না পছন্দ কোটা সমাজরে থিবা সমস্ত প্রকারর কার্যদক্ষতাকু সে নিজে পরিচালিত করিলা বেলে সে নিজকু ঠিক ভাবে পরিচালিত করিথায়. দ্যাট ইজ বিকশিত করিবা বা টু ডেভেলপ. এডুকেটম মিন্স টু ট্রেন, মিন্স the individual get education and getting a training. One type of the, what types of the training? Training means behavioral training, a modification of a behavior through education. So Mahatma Gandhi said that education means, I mean all round drawing out the best in body, mind and spirit. Means mu bujhe Mahatma Gandhi कहले जे शिक्षा हेउची एको सर्वोत्तम विकास शरीर मन एवं आत्मा. Similarly, the Vivekananda said that education is a manifestation of divine perfection already existing in man. जे शिक्षा हेउची गोटे दैवी प्रदत्त शक्ति जहा मनुष्य निकटरे पूर्वरु थाए. It means the education enter into the human body, that is also a care, develop and training and also a teaching. That is called a education, derived from the Latin and Greek word educare, educere and educatum. Now we discuss another wordical meaning like a Sanskrit word. Sanskrit word. Previously we discussed the Latin and Greek word, that is called
education. Educare, educare, and educatum. Now the word derived from the Sanskrit word vidya. Education is a vidya and sikhya. Sikhya, vidya and sikhya. Vidya comes from vid and sikhya comes from sas. It means, vid means a word, or in Sanskrit we called as a dhatu. Vid means vedati vitta vidanti, vedasi vitta vitta, vedami vidva vidma. Means education creates a wisdom among the individual. Means गोटे ज्ञानर गंताघर जो ब्रह्मं जानाति इति स ब्राह्मण, जे ब्रह्म को जानिछंती, जे वेद, विद मीन्स विद्वान, जहाँ को आमे वेद को जानिछंती, ज्ञान को अर्जन करिछंती, तेणु विद धातुरु सेटा आछि, मीन्स टू नो. टू नो मीन्स जानिबा. जे जाने से ज्ञानी. सिंपली वी डिस्कस, जे जाने से होछि ज्ञानी. Similarly sas means, sas dhatu means sasati. It means to control or to discipline. अर्थात एठी होछि नियंत्रण करिबा, नियंत्रण एवं श्रृंखला. ताहले we discuss about the Sanskrit root word, two Sanskrit root word. One is vidya and second is sikhya. So vidya comes from the vid. It means to know, means those are knowing or curiosity among the individual, जहाँकि व्यक्ति भितर जिज्ञासा, जानिबार इच्छा जहाँ पाखरे थाए सी जाने एवं ज्ञानी हुए, ताको आमे विद बा विद्वान बोली कहू. दैट इज कॉल्ड ए एजुकेशनिस्ट. देन शिक्षा कम्स फ्रॉम द सास धातु, मीन्स शासति शासतो शासन्ति, शासति शासतो शासतो, शासामि शासव शासम. सिम्स वेदाति वित्त विदन्ति, वेदासि वित्त वित्त. मीन्स दोज आर एक्वायर्ड एजुकेशन. दे also control ourselves, himself as well as the other selves. They discipline other selves, means himself as well as the others. अर्थात जे श्रृंखला ज्ञान ग्रहण करती शिक्षा द्वारा, से कौन करती ना नियंत्रण करती, प्लस निजको श्रृंखलित करती, अन्य मानों को श्रृंखलित करिवारे चेष्टा करती. दैट इज द वन टाइप ऑफ द एजुकेशन दैट इज कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद्या एंड द शिक्षा. Lastly, we discuss about the system of education given by the different educationists. That is called a Western philosopher and educationist and Indian educationist or philosopher. First we discuss about the Indian. First we discuss about the Indian philosopher. भारतीय दार्शनिक. प्रीवियस स्टेटमेंट रे मु कहि गली भारतीय दार्शनिक दुई जनकर, महात्मा गांधी, विवेकानंदंकर कहिछि. तो भारतीय दार्शनिक बा इंडियन फिलोसोफर मोस्टली बेस्ड ऑन दी नेचुरालिज्म बा प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म बा आदर्शवाद, एंड स्पिरिचुअलिज्म बा आध्यात्मिकवाद.
That is the three philosophy based on Indian philosopher. Indian philosophers are mostly faith on nature. So they also depends upon the nature means Prakruti, ism means Vada, Prakruti Vada. Similarly, they are also based on the idea. Idea comes from the idean means the idea has now. गोटे बिल्डिंग छिड़ा है आइडियाटा इंजीनियर अच्छी किंतु इंजीनियर मरी जाइए. द आइडिया इज एवरीथिंग. विदाउट आइडिया नो नॉलेज इज सरफेस ऑन द अर्थ. जे जदि तुम पाखे हजार ज्ञान थाए किंतु तुम्हें जदि प्रकृत रे से आइडियाटा को सरफेस न करि पारलो अन्य मान को देखै न पारलो ताहले से आदर्शर किछि ए नाही. तेणु लोक मरी जानती किंतु तांकर आदर्श ठीक भाबरे था. सो Indian philosophers are based on idealism. Next, spiritualism. Spiritualism means a eternal value among the individual. Means a discipline, a control comes from the spirit. That is called a spiritualism. Means the spirit is a one type of. Mahatma Gandhi said, by education I mean all round drawing out the best in body, mind and spirit. Means गोटे मु बुझे जे शिक्षा होची गोटे व्यक्तिर बा शिशुर सर्वोत्तम विकास जहा होची कोण ना मन शरीर एवं आत्मा. से आत्माटा होची स्पिरिट. स्पिरिट मीन्स ए वन टाइप ऑफ जेटा आमे को विवेक. मीन्स वी डिस्कस अबाउट द एजुकेशन एंटर इनटू द ह्यूमन बीइंग देन ए spiritual capacity among the individual. गोटे व्यक्ति भितर आध्यात्मिक चेतना कार्यकारी हुए जहा मनुष्य को एक श्रृंखलित एवं सौष्ठव मनुष्य रे परिणत करिवा पई चेष्टा करि थाए. दैट इज द इंडियन फिलोसोफर ऑफ बा भारतीय दार्शनिकंकर मतवाद रे पर्यवेसित हेथिबा समस्त प्रकारर आदर्श बा आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, आध्यात्मिकवाद. सेहीपरि आमे देखिबा को जिबा जोटा वेस्टर्न फिलोसोफर बा पाश्चात्य दार्शनिक. मु आगरु कहिछि एटा कहि दिए. मु आगु कही जे इंडियन फिलोसोफर मीन्स एम.के. गांधी, विवेकानंद, गोपबंधु, श्री अरविंद एमाने थांती. किंतु वेस्टर्न फिलोसोफर मीन्स अरिस्टोटल, कांट, हिगेल, फॉरवेल, रूसो. दे आर द कंट्रीब्यूटर ऑफ द एजुकेशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट. सो दे आर द नेचुरलिस्ट, दे आर प्रैग्माटिस्ट. मीन्स प्रयोगवाद. प्रयोगवाद मीन्स दे आर बेस्ड ऑन द वर्क. एवरी नॉलेज practically work and prove your knowledge. एमाने गोटे आदर्श रे प्रकृति रे छाड़ी देउतले आपे आपे बढ़िबो. किंतु सेमाने कहउछन तुम पाखरे जदि शिक्षा अछि तुमे प्रमाण करिके देखाओ, तुमे कार्य रे परिणत करिके देखाओ. दैट इज कॉल्ड ए प्रैग्माटिज्म बा प्रयोगवाद. तेनु प्रयोगवाद गोटे तापर होछि कोन ना एक्जिस्टेंशियलिज्म. एक्जिस्टेंशियलिज्म मीन्स स्थितवाद. That is exist. There are exist in essential. In education, we faith on the that is pen, not it is a marker. Because of his existence, writing in a whiteboard, but pen in writing in a paper. They are the existence. They are system. Education know about the existence of the man, human being, and their behavior and work on the earth. ये पृथ्वी रे समस्त कार्य को संपादित करिबा पई ये सब कार्य से माने विश्वास करती कौन ना स्थितवाद. प्रैग्माटिज्म जहाँ को कहूचे आमे कौन प्रयोगवाद. तेणु आमे ये जो वेस्टर्न फिलोसोफर एंड इंडियन फिलोसोफर दे आर कंट्रीब्यूटेड फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट थ्रू डिफरेंट डेफिनेशन और डिफरेंट जहाँ को आमे
kohu odiyare sangya for development of the education. That is finish about the definitional meaning as well as the wordical meaning of the education. That's all.